happy. So today we are going to begin with the lesson number 13 of your class 7 English grammar, that is direct and indirect speech. So let's begin with this lesson. Direct speech is when we use the exact words spoken by someone. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो हम एग्जैक्ट वर्ड्स कन्वे करते हैं, जो किसी ने बोले हैं, वो हमेशा हम किस में रखते हैं? कोटेशन मार्क्स लाइक इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम मैसेज को अपने वर्ड्स में कैरी कर देते हैं, कन्वे कर देते हैं, वर्ड्स अपने वर्ड्स में मैसेज को कन्वे कर देते हैं, तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच. वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होती. सो व्हेन वी यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, इट एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स. किसमें एनक्लोज होता है? वो कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज होता है. इट गिव्स द फील ऑफ स्पीकर. किसका फील देता है? स्पीकर ओरिजिनल वर्ड्स का. वर्ड्स बीइंग रिपीटेड एग्जैक्टली एज दे वर सेड. एग्जैक्टली रिपीट होते जैसे बोले गए थे. एग्जांपल, काजल सेड वी हैव टू टर्न होम बिफोर इट गेट डार्क. इनडायरेक्ट स्पीच also known as reported speech. उसे कैसे जानते हैं? हम reported speech की तरह भी जानते हैं. And when we report what someone said without using the exact words, हम रिपोर्ट करते हैं कि किसी ने क्या कहा है, क्या यूज करे बिना, exact words यूज करे बिना, we make some changes. हम कुछ changes करते हैं to the sentence structure and verb tenses में. The example given above could be repeated as follows, like Kajal said that they had to return home before it got dark. There are three basic changes that takes place when a statement is being reported. Three changes होते हैं. चेंज होता है हमारा टेंस में, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और या फिर पजेसिव एडजेक्टिव. चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस मार्कर्स. नाउ चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. कैसे होता है टेंस चेंज? टेंस इन डायरेक्ट स्पीच एंड चेंज ऑफ टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई सेड आई एम अनवेल. सिंपल पास्ट में क्या होगा? आई सेड दैट I was unwell. Present continuous tense, I am reading, he said. Past continuous, he said that he was reading. Present perfect tense, she said I have eaten. Past perfect tense, she said that she had eaten. कि उसने खा लिया है. Simple past tense, he said Pooja fell down. Past perfect tense में क्या होता है? He said that Pooja had fallen down. Past continuous tense, I said I was painting. Past perfect continuous tense, I said that I had been painting. Past perfect tense, he said I had watched 3 films. Past perfect tense, he said that he had watched 3 films. Direct में क्या होगा? Simple future tense का I said I will go. Will का क्या जाता है? Would हो जाता है. I said that I would go. Now, no change in reported speech. कोई change नहीं होता reported speech पे. कहाँ पे? The modals could, would, should, might and ought to in direct speech do not change when changing to reported speech. ये change नहीं होते ये वाली बात जब हम इनको reported speech में कर रहे होते हैं change. So the examples, direct, Harshita said I could not finish my work. Indirect में क्या हुआ? Harshita said that she could not finish her work. Direct में Salim said my brother should help me. Indirect में क्या हो गया? Salim said that his brother should help him. The modals must not in direct speech has no change when changing to the reported speech. जो modals होता है must not वो direct speech का जो होता है, जब हम उसे reported speech में change कर रहे होते हैं कोई change नहीं होता. Direct, Meena said she must not cry. Indirect में क्या होगा? Meena said that she must not cry. So क्वेश्चंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. क्या क्वेश्चंस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में? द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच चेंज टू डिक्लेरेटिव इन रिपोर्टेड स्पीच. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच को चेंज हो जाता है डिक्लेरेटिव में रिपोर्टेड स्पीच में. एग्जांपल्स, व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई? शी सेड. ठीक है, डायरेक्ट मैसेज आपका डायरेक्ट सेंटेंस है. शी सेड मी व्हेन आई वाज. शी सेड टू मी भी हो सकता है. व्हेन आई वाज गोइंग टू मुंबई, क्या इनडायरेक्ट है. नाउ नोट, हियर इज द नोटेड पॉइंट. A full stop is used in reported speech, not a question mark. Full stop use होता है reported speech में, question mark तो नहीं होता. Other reporting verbs such as inquire and demand can also be used. Reporting verb जो दूसरी थे inquire हो गया, demand हो गया, इनको भी हम use कर सकते हैं. Now WH question. The WH word repeated and it's followed by the subject. वो किससे follow होता है? Subject से follow होता है. The verb comes at the end. Verb कहाँ आती है? End में आती है. Now, where are my spectacles? Said Mana to Jatin. ये क्या डायरेक्ट है?
Manan said, Manan asked Jatin, where is his spectacles? Wow, ये क्या हो गई? Indirect हो गई. एंड में आ गया वर्ब. क्वेश्चंस विद yes or yes no as answer. Questions which begin with auxiliaries such as, जो questions किससे begin होते हैं? auxiliary से begin होते हैं, like is, am, are, was, were, has, have, had, are introduced in direct speech. किसमें introduce होता है? direct speech में introduce होता है. कैन से? whether से या फिर if से. So example, Leela said to Sam, are you going to Anju's house tomorrow afternoon? Direct speech है. Leela asked Sam if he was going to Anju's house the next afternoon. This is indirect. Now do questions. इसमें yes or no में ही answer होगा. So do questions. Questions which begins with auxiliaries. जो questions किससे begin होते हैं? auxiliary, जैसे कि do, does, did. Are introduced in indirect speech. किसमें introduce होते हैं? indirect speech में introduce होते हैं by the word whether or if. कौन करता है? whether or if करते हैं. Like Mr. Ganguly said to students, do you know that you will be required to fill in the examination form today after school? Mr. Ganguly asked, said to का क्या हो गया? asked हो गया. asked the students if they knew that they would be required to fill in the examination form that day. Today का क्या हो गया? that day after school. ये क्या है? indirect speech है. Questions marked with modal auxiliaries. Now these are also introduced in reported speech by the words whether or if. भी कौन introduce करता है reported speech में? whether or if. Also the form, the modal changes as can, could, will, would, shall, should, may, might. Can का could हो जाता है, will का would, shall का should, may का might. Example, I said to boss, may I go home now? ये क्या है? direct है. I asked the boss if I might go home then. ये क्या है? indirect है. Now change of pronoun in reported speech. कैसे change होता है pronoun reported speech में? First person pronoun in the direct speech change according to subject. Direct speech में कैसे change होता है? subject के according of reporting verb in the reported direct speech. Indirect speech like he said I am ready. Indirect में क्या होगा? He said that he was ready. I said I am ready. I said that I was ready. They said we are ready. They said that they were ready. Now second person में क्या होता है? In the second person pronouns in direct speech changes according to the object. किसके according change होता है? वो object के according change होता है of the reporting verb in the indirect speech. Now direct speech क्या है? He said to me you are early. Indirect में क्या होगा? He told me that I was early. Now direct में क्या है? She said to me you are early. Indirect में क्या हो जाएगा? She told me that he was early. Subhash said to the party workers, do you work properly? Indirect में क्या हो गया? Subhash told the party workers to do their work properly. Now third person pronouns in the direct speech do not change in the indirect speech. जो third person pronoun होता है direct speech में, वो indirect speech में change नहीं होता. Like he said she is early. He said that third person ना, she was early. She said they are early. She said that they were. Changing request, advice and suggestion in reported speech. कैसे change करता है request को, advice को, suggestion को reported speech में? Like when you are reporting someone's word, जब आप किसी के words report कर रहे हो, the reporting verb that you use should express the feelings of the speaker. क्या express करनी चाहिए इसको? feeling of the speakers express करनी चाहिए. So instead of just saying said or asked, you can use wide variety of verbs such as like advised, added, admitted, argued, assured, denied, suggested, explained, observed, objected, promised, protested, remind, remarked, replied, ordered, complained, demand, answered, and so on to suit the occasions. Like changing expression, time and distance in reported speech. कैसे करते हैं? डायरेक्ट का. इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं? This का that, these, those, here, there, now, then, ago, before, today, that day, last, the previous day. Next, the following. Tomorrow, the next day, the following day. Yesterday, the previous day, the day before. Thus, so. Now, rules for changing indirect to direct speech. क्या rules होते हैं? While writing in direct speech, use speech marks before and after the words spoken. आपको speech marks use करने direct speech में, like inverted commas. Like rules, the two part of the sentence, the word spoken and the word that have the reporting verb are separated by commas.
जो टू सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ड्स बोले गए हैं और जो वर्ड्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो किससे सेपरेट होनी चाहिए, कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए. लाइक she said, she asked, how are you today? I am well, thank you. He replied. कॉमा से अलग है. The first letter of the direct speech being reported is a capital letter. जो direct speech का first word होता है वो क्या होगा, capital letter होगा. I told him you must be careful. You का y क्या capital है. The punctuation mark at the end of the word inside the speech marks is governed by the speech. जो punctuation mark होनी चाहिए जरूर उसमें. If the reporting clause breaks a sentence of the speech, जो reporting clause होता है break करते हैं sentence speech के, there is a comma after the reporting clause. एक comma होता है reporting clause के बाद. The first letter of the reporting resumed speech is in the lower case. Like please, he said softly, don't disturb my grandmother. If the speaker says two separate sentences, अगर speaker क्या कह रहा है, दो separate sentences कह रहा है, then we use a full stop at the end of the reporting verb. हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप करते हैं यूज किसके एंड में, रिपोर्टिंग वर्ब के एंड में. एंड स्टार्ट द सब्सिक्वेंट कोटेशन विद अ कैपिटल लेटर. किससे स्टार्ट करते हैं सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, कैपिटल लेटर से. लाइक आई हैव ईटन टू मच, कॉमा शी सेड डोंट, यहाँ पे फिर कैपिटल लेटर आ गया, डोंट कुक माय डिनर फॉर मी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. आई होप यू आर लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट